Hello dear student, welcome to the ASIC Academy online study. In this video today we will be discuss about some important MCQs which will be helped for the upcoming nursing competitive exam. I am Oswani sir. Welcome to you all once again. On previous video we have discussed 20 important MCQs and in this video we will be discuss some another MCQs. Okay, let's proceed. Question number 21. A patient is having dyspnea. To facilitate respiration, the nurse would do. The options are: remove a pillow from the head, elevate head of the body, elevate foot of the body, and take the blood pressure. Here, the correct options is elevate head of the body. Question number 22. A patient has an abnormal, unexpected response to a drug. This is defined as what? Options are drug tolerance, a cumulative effect, idiosyncratic effect, or anaphylactic. In these four options, second option is correct answer, that is a cumulative effect. Question number 23. You have to administer a medication using the nasogastric tube. Before giving medication, you should do what? Options are: crush the enteric coated pill for mixing in a liquid. Next, flush open the tube with 60 ml of very warm water. Next, check a proper placement of NG tube. Next, take a patient vital sign. So in these four options, option 3, that is check the proper placement of NG tube is very important. कहीं ना जदि एनजी ट्यूबटा ठीक प्रॉपर प्लेस रे ही अच्छी जदि ताले आमे मेडिकेशन टाकू नासोगैस्ट्रिक ट्यूब रे दे परिबा नचे दे परिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. विटामिन के 10 mg is given IM is ordered to vitamin K is available as 5 mg per ml. How much would the nurse administer? Options are 1 ml, 2 ml, 3 ml or 4 ml. एठी एस प्रॉब्लम टाको सॉल्व करबा को हेले आमर गोटे ड्रग रो कैलकुलेशन फार्मूला रहिछि. ताले ए कैलकुलेशन फार्मूलाटा होछि डिजायर्ड ड्रग डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज ऑन हैंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटी. ताले अवेलेबल डोज होछि 10 mg, डोज ऑन हैंड 5 mg, क्वांटिटी होछि गोटे ml को 5 mg ताले 1 ml. ताले एठी जदि आमे सॉल्व करिबा एठी होबो 2 ताले 2 ml. So in this options correct option is second, that is 2 ml. Next question. While administering the blood transfusion, when would the nurse assess the patient for a blood transfusion reaction? Every 15 minutes after the infusion is started, after the blood is all infused, every hour, every 15 minutes. Correct option is here every 15 minutes after the infusion of started. Question number 26. When assessing a patient at a risk for pressure ulcer formation, which site would the nurse identify as being most common? Occipital area, sacrum area, sternum area, humerus area. Here the correct option is most common occipital area. सैक्रम रीजन भी हो पारे बट कंपैरिजनली ऑसिपिटल एरिया होची बेसी इंपोर्टेंट बा मोस्ट कॉमन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पेशेंट इज रिसीविंग 1000 ml of IV fluid. Mistakenly written is 100 but it is considered as 1000 ml. A patient is receiving 1000 ml IV fluid per 24 hours using an IV set with a drop rate
15 drops per ml the nurse would plan to regulate the IV is dash 10 drops per minute, 15 drops per minute, 20 drops per minute or 30 drops per minute. Fluid calculation ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି जोटा कि total amount of fluid divided by time in minute multiplication of a drop factor. ताले total amount of fluid क्वेश्चन अनुसार आमर एठी होची 1000 ml होची total amount of fluid divided by time in minutes होची 24 आवर अच्छी जदि आम मिनिट रे कन्वर्ट करिबा ताले 60 मल्टीप्लिकेशन ऑफ ड्रॉप फैक्टर होची 15 ड्रॉप्स पर एमएल ताले याकु जदि आम कैलकुलेशन करिबा ताले एठी पड़िबो पाखापाखी 10.41 होची आर आंसर ताले ऑप्शंस को जदि आम माने लक्ष्य करिबा ताले एठी ऑप्शंस होची ऑप्शन 1 टा होची हमर करेक्ट आंसर दैट इज 10 ड्रॉप्स पर मिनिट्स. Next, to the identification of a client's health needs occur, the nursing process step is planning, evaluation, assessment or implementation. ताले गोटे प्रॉब्लम फाइंड आउट करबा पई गोटे पेशेंट को आइडेंटिफिकेशन करबा पई फर्स्ट प्रोसेसटा कोन प्रोसेस होची असेसमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर are which of the following need according to the Maslow hierarchy of human need? Options are physiological need, safety and security need, love and belonging need, and self-esteem need. In this question, physiological need is the correct answer because oxygen, food and water, these are the basic need under the Maslow hierarchy need. This is coming under the bottom point, or we can say it will be the base level. Under the base level, as I told, physiological need, it is breathing, food, water, shelter, clothing, sleeps, etc. These are coming under the physiological need. Next, safety and security need, health, employment, property, family and social ability होची सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड. तापर होचे लव एंड बिलोंगिंग नीड जेमती कि फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटीमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शन एक्सेट्रा. नेक्स्ट, सेल्फ एस्टीम नीड. अंडर द सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रेस्पेक्ट ऑफ अदर, नीड टू बी इक्वल इंडिविजुअल. तापर होचे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एथरे आसीबो मोरालिटी, क्रिएटिविटी, ए सब जिनस होचे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रे आसीबो. ताले ए सब क्वेश्चन अनुसार आमर करेक्ट ऑप्शन होची एठी फिजियोलॉजिकल नीड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू फाइंड ए पर्सन इज लाइंग ऑन द ग्राउंड विथ ए कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, व्हाट विल बी द इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन? assess the responsiveness, assess airway, assess circulation and assess breathing. ताले कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट ही जन ग्राउंड रे पड़ीचंती ताले एठी हमर इमीडिएट एक्शन रहिबो कोन से अलर्ट अछंती कि नाही. assess the responsiveness, से हमको रेस्पॉन्स करूचंती कि नाही. if that person is not responsive to us, then we have to do CAB rule, means first of all we will be give the circulation, then airway and then breathing. Acha, next question. ICN, the National Council of Nurse, was established in the year 1899, 1888, 1898, 1889. Correct option is 1899 AD. Acha, next question. NEN, National Licensure Examination for a Nurse, is conducted by NNC, INC, NAN and INC. ताले एठी करेक्ट ऑप्शन होची NNC. Next question. If the heat is transferred from one object to the another object on direct contact, it is called convection, conduction, evaporation, radiation. जदि डायरेक्ट कंटाक्ट गोटे ऑब्जेक्ट सहित आ गोटे ऑब्जेक्ट कंटाक्ट होकर रही ताले सी हूँ कंडक्शन जीव. जदि गोटे फ्री स्पेस रे रही मूवमेंट ऑफ एयर जो से ठंडा हो तार हिट रिड्यूस हो सी हूँ कन्वेक्शन. आउ रेडिएशन हूँ रेडिएशनटा हूँ
जदि गोटे ऑब्जेक्ट्स आ गोटे ऑब्जेक्ट सहित गोटे डिस्टेंस रे थिबो एंड हीट ऑब्जेक्ट रो कोल्ड ऑब्जेक्ट को सेटा हीट ट्रांसमिट होउथिबो सेटा होछि रेडिएशन आ गोटे होछि इवापोरेशन इवापोरेशन होछि वेपर हेकि जदि हमरो गोटे हीट टा लॉस होउथिबो ताले सेटा होछि इवापोरेशन। Question number 34. When the elevated temperature fluctuates widely but doesn't reach the normal level between the fluctuation is called constant fever, remittent fever, intermittent fever, relapsing fever. The correct option is remittent fever. Next question. The type of abnormal breathing which is the combination of hypopnea and apnea. The options are dyspnea, orthopnea, side-stroke breathing and asphyxia. The correct option is side-stroke breathing. Next, a client has the temperature of 104 degree Fahrenheit and this temperature is equals to which degree centigrade. ताले एठी फारेनहाइट स्केल टा हमको देइछि सेंटीग्रेड स्केल को हमको काढिबार अछि ताले एठी फार्मूलाटा होछि c is equal to f minus 32 into 5/9 c is equal to c काढिबार अछि c is equal to f minus 32 into 5/9 5/9 ताले f होछि 104 minus 32 ताले 104 रु 32 माइनस कले हमको केते आसुछि 72 आसुछि इंटू 5/9 ताले एटा को जदि हमें काटिबो 8 पडिबो ताले 8 पंचा होछि 40 ताले एठी करेक्ट ऑप्शन होछि 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताले करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड that is 40 degree centigrade. Next question. A patient is receiving the blood transfusion. If the allergic reaction to the blood develop the patient, the nurse's first intervention would be call the psychiatric, stop the blood immediately, slow the flow rate of blood and administration allergic drug. The first intervention is stop the blood immediately. Next question. Which is unfavorable factor affecting the wound healing? Young age, hemorrhage abundant, intake of protein, calcium, vitamin C, blood supply in the injured part. ताले ए चारटा ऑप्शन भितरु कोनटा हमर अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन होछि हमर यंग एज हेले हिलिंग हेजिबो ताले प्रोटीन कैल्शियम एंड विटामिन सी जदि इनटेक होबो ताले एटा हेजिबो ब्लड सप्लाई जदि इंजुरी पार्ट को रहिजो ताले एटा भी हेजिबो ताले एठी अनफेवरेबल कंडीशन भितरे हमर आसीबो ऑप्शन बी दैट इज हेमरेज अबंडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग द नर्स शुड फॉलो राइट्स 4 राइट्स 5 राइट्स 6 राइट और 10 राइट्स. एक्चुअली एटा वर्तमान 14 राइट्स हो गलानी ऑप्शन रे एटा नाही सत किंतु 14 राइट्स हो गलानी जेमति कि राइट ड्रग राइट डोज राइट रूट राइट टाइम राइट पेशेंट राइट असेसमेंट राइट अप्रोच राइट एजुकेशन राइट इवैल्यूएशन राइट डॉक्यूमेंटेशन राइट टू रिफ्यूज राइट प्रिंसिपल ऑफ केयर राइट प्रेस्क्रिप्शन एंड राइट नर्स क्लिनिशियन ये सब एमती है कि 14टा राइट्स हो गलानी किंतु ए जिनसटा जेहेतु हमर ऑप्शंस रे नाही तेनु एठी 10 राइट्स हमर करेक्ट होबो. नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन. फॉर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग द नर्स शुड फॉलो राइट्स ग्लूटियस मैक्सिमस डेल्टॉइड मसल ग्लूटियस मिनिमस एंड वेंट्रस लेटरालिस. करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टॉइड मसल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस व्हिच मेक inanimate object safe to be handled by health personnel before cleaning is sterilization, high level disinfection, decontamination और होची cleaning. एठी होची inanimate object माने होची death object जेमति कि death animal body ए सब जिंस को हमें केमते सेफली हैंडल करिबा ताले एटा होची decontamination जति करिबा ताले हे परिबो. नेक्स्ट. recommended temperature
द टाइम प्रेशर फॉर ऑटोक्लेव स्टीम अंडर प्रेशर जोटा कि कहुच्छे ऑप्शंस आ भितर कौन एक्चुअली ताले ऑटोक्लेव आमर हूँ 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता दरकार तापर हूँ 15 LBS प्रेस सॉरी LBS प्रेशर होता दरकार बा ताकू पाउंड प्रेशर कहते आउटे हूँ 30 मिनिट्स टाइम होता दरकार 30 मिनिट्स टाइम होता दरकार ताले एठी ऑप्शंस को जदि देखिबा आमर 121 नियर रे रही 120 डिग्री सेंटीग्रेड रही 15 LBS प्रेशर जोटा कि 106 किलो पास्कल कहते आउ 30 मिनिट्स रही ताले आपाई आमर ऑप्शन 1 टा होची आमर करेक्ट आंसर जोटा कि एठी लिखा है 120 डिग्री सेंटीग्रेड रे अछि किंतु एटा 121 डिग्री सेंटीग्रेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग the cleaning enema of the client enema to a client with a facial infection before administering the enema the nurse place the client in which position left seams position right seams position on the left side of the body when the head of the bed elevated 45 degree आउटा होचे नॉन एठी होचे करेक्ट आंसर लेफ्ट सिम्स पोजीशन ओके कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 हु विल बी द थर्ड मैनेजर फॉर यू एट PHC ताले PHC लेवल रे हमर थर्ड मैनेजर की रहबे थर्ड लाइन मैनेजर सी होचंती मेडिकल ऑफिसर तापरे होची 45 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ए नर्स इज प्रिपेयरिंग द insert an nasogastric tube in an adult client to determine the measurement of the length of the tube to be inserted. The nurse would dash make the tube at 10 inches, make the tube at 32 inches, place the tip the nose measured by extending the tube to be the lobe and then down to the zippered process. Next option which place the tube at the tip of the nose and measure by extending the tube lobe and then down to the sternum. Actually ए नासोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करबा पई हमर गोटे नेक्स्ट मेथड रही नेक्स्ट मेथड कौन ना से येटा होची NEX मेथड ताले ये होची फास्ट नोज पाखरु ईयर ऑफ द लोब को जीवो ईयर ऑफ लॉज पाखरु हमर जीपी स्टर्नम जिफेड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम पर्यंत जीव ताले आकु जदि आमे आखि आगे रखिबा ताले एठी करेक्ट ऑप्शन टा होची कोटा रहइबो करेक्ट ऑप्शन टा होची एटा रहइबो 3 नंबर टा रहइबो हमर करेक्ट आंसर तापरे होची क्वेश्चन नंबर 46 द फिजिशियन डिस्क्राइब्ड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द क्लाइंट व्हिच टू द फॉलोइंग IV सॉल्यूशन would the nurse expected to be possible ताले एठी हाइपोटोनिक कथा पचारची ताले एठी 0.45% सोडियम क्लोराइड टा होची कोन हाइपोटोनिक होबो जदि आइसोटोनिक कथा कहि थांता ताले एटा होची 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड हे थांता ता सहित RL मध्ये हे थांता हमरो आइसोटोनिक आ हाइपोटोनिक टा रहिची आमर 10% डेक्सट्रोज ये सब जिनस रहिबा हाइपोटोनिक ताले टी क्वेश्चन अनुसार हाइपोटोनिक टा रहिबो 0.45%। क्वेश्चन नंबर 47 द नर्स हैज ऑब्टेन्ड द यूनिट ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक एंड हैज चेक्ड द ब्लड बैंक प्रॉपर्ली with another nurse just before beginning the transfusion the nurse assess which of the following item ताले एठी vital signs स्किन कलर यूरिन आउटपुट आउट होची लेटेस्ट हेमाटोक्रेटिक वैल्यू ताले क्वेश्चन अनुसार एठी करेक्ट ऑप्शन होची वाइटल साइन तापरे होची बेस्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन यूज द इरिगेशन फॉर यूरिनरी कैथेटर डिस्टिल्ड वाटर नॉर्मल सैलाइन टेप वाटर और वार्म वाटर ताले करेक्ट ऑप्शन इज नॉर्मल सैलाइन। क्वेश्चन नंबर 49 द मोस्ट इंपोर्टेंट वे टू प्रिवेंट the spread of infection wearing the gloves options are wearing the gloves hand washing wearing the mask or wearing the coat ताले एठी hand washing
which is the best method for break off of infection or break up the or prevent the spread of infection. Hand washing is the correct answer. Now question number 50. Which instrument is used the test of the client's hearing? Stethoscope, tuning fork, otoscope, out होचे रिफ्लेक्स ह्यूमर. ताले एठी को इंस्ट्रूमेंट आमर क्लाइंट्स हियरिंग रे हेल्प करा जाए सेटा होचे ट्यूनिंग फॉक. ताले नेक्स्ट other MCQs will be discussed on the next video. Thank you.